is the end game of polio, which will begin with that, and the switch in April. We do 90 lakh sessions, as I said. Our problem is that in certain areas, particularly in 201 districts of this country, less than 50% get all the vaccines. And therefore, they are partially immunized, and about 12 lakh people out of that 80 lakh cohort is completely immunized. So that is our target, as the Honorable Union Minister was talking. And we want to ensure that diseases like hepatitis B, which can be prevented, must be prevented by reaching every child, which is once when the child is born and 3 thereafter. So I will leave you with that. If there are questions, you're most welcome, please. Please. अमित जी नमस्कार, मेरा नाम आरजे आलोक है, मैं OAFM आज तक से हूँ। अमित जी, सवाल ये है कि विज्ञापन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेंगे, जिस तरीके से पोलियो के दौरान भी आप पहुंचे थे, लोग आपकी बात को मानते भी हैं, लेकिन जो तबका टीवी नहीं देख पाता है, जिन तक रेडियो की भी सुविधाएं नहीं है, उन तक किस तरीके से पहुंचा जा सकेगा इस पूरी प्रणाली के दौरान? जी, जब मैं यहाँ पर मंच पे बोल रहा था तो मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान जो था वो आकर्षित करवाया था उन वर्कर्स का, जो कि एक्चुअली फील्ड में जाते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, जगह-जगह जाते हैं। वही लोग हैं जिनके पास टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। और इसीलिए मैं उनकी सराहना इतनी ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, बहुत से खूबसूरत चेहरे आकर के कुछ बोल देंगे, कुछ कह देंगे। सरकार जो है अपनी तरफ से अपनी मशीनरी शुरू कर देगी, लेकिन कौन उसको जा कर के इम्प्लीमेंट करेगा, कौन देखेगा कि ये सही जगह पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? ये वो वर्कर्स हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण अंश हैं इस कैंपेन के। इसीलिए मैं उनकी सराहना करता हूं। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जितने भी वर्कर्स हैं, उनके द्वारा जो है हमारा जो ये कैंपेन है उन तक पहुंचेगा। Amit sir, here. Sonup from Indian Express. Last time you had spoken about how women suffering from TB are deeply stigmatized in our society. What measures could be taken to erase that stigma? Yeah, I'm glad that you brought it up, because I should really have mentioned it in my address there. But I just felt that I'd already spoken about it in my campaign video that you saw. See, one of the things that really disturbed me, and I say this not just as an individual, but also now as a representative of UNICEF Girl Child, that there's a huge amount of discrimination that takes place towards women who are suffering from hepatitis B or tuberculosis. Dr. Barve made a short reference of it in his speech, where he said that even though a pregnant woman is hepatitis B carrier, there is a 90% chance of the child that she's going to give birth to is going to have the same disease. Many of us are not aware that this has become a social stigma where even before marriage or after marriage, if the family of the boy come to know that the incoming lady into the house is infected with a particular disease, many a times they refuse her entry into the house. She's discriminated against. She's alienated. She's put away. I think this is a terrible thing that can happen to any person, any individual in society. And in order to prevent that, that is why we are wanting to lay stress on this point, that this social discrimination has to stop. And it can only stop if we can detect it through awareness, whether somebody has, whether we can start the treatment and prevent people from trying to pursue this horrible stigma that we have, that just because the woman is wrong, therefore she's bad for society. That is not acceptable to me, and I'm sure not acceptable to anyone in this room. Sir, would you like to use cinema as a medium to perhaps get the stigma out and maybe make a film that focuses specifically on this issue? Yeah, you know, cinema is an entertainment medium. I wouldn't mind doing cinema in the form of a documentary where we talk about all these ailments. But I doubt very much, sir, that you can pick any film, at least from India, where we have not addressed any kind of social issue and found a way around it. We have always stressed upon various important social issues that have plagued our country. And we have taken up
Look at some of the films that have been made, you know, in the 40s and the 50s. Look at films like Sujata and films that were made by Bimal Roy. They've always talked about these stigmas, but have gone around it. We have always found that good has overcome evil. We have given you poetic justice in 3 hours. You and me will not get it in a lifetime. So, you know, films are an entertainment medium, but through that medium, we have never tried to say, oh, just because she's suffering from hepatitis, we're not going to get married to her. I think we've never ever stressed that point. So yes, if you want me to be part of a documentary that talks about this, I'm more than willing to do that. But you know, that's a documentary. And people don't pay, you'll pay 2,000 rupees to go and see a film in a multiplex, and you're not wanting to see hepatitis B or tuberculosis. It can be a part of the story, which has been very interestingly done in most of our stories. And we've shown in the end that, yes, there is success. मेरे ख्याल से Just 1 second. अमित जी, मेरा नाम अलका है, मैं एक मिनट दिल्ली Just 1 second, जरा Alka ji. रुकिएगा. Let Jaya ji ask. Yeah. Jaya just informed me that Revati from the South, a very prominent leading lady, made a film on HIV, which had Salman Khan, Shilpa Shetty, and Abhishek Bachchan. And it was called Phir Milenge. It was concentrating on HIV. मेरे ख्याल से And sad to say, sir, which answers your question, that film did not do well at the box office. I think it's an indicator of, you know, an answer to your question. मेरे ख्याल से यहाँ इलाहाबाद की जो हमारे पत्रकार हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं सवाल पूछने के लिए. पीटीआई और अमर उजाला के पत्रकार जो हैं इलाहाबाद से आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं. जी पूछें. अमिताभ जी का इलाहाबाद के और इलाहाबाद के सराउंडिंग्स के जो जनपद हैं, प्रतापगढ़, रायबरेली, भदोही, जौनपुर, यहाँ से जो लोग आए हैं वो अमिताभ जी का बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं कि आज उन्होंने अपनी कर्मस्थली और जन्मस्थली के बीच ऐसा एक संबंध जोड़ा है और इस देश के महान अभियान की सफलता की शुरुआत अपनी जन्मस्थली से कर रहे हैं. इसके लिए पूरा इलाहाबाद, उसके सरहदी जिलों के पत्रकार और समूचे प्रदेश के पत्रकार आज उनके साथ अपनी भी आहुति देने के लिए तैयार हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और इसके साथ आज सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहाँ के पत्रकार आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरीके से नहीं बात करना चाहते हैं. आपका संदेश, आपकी विचारधारा जो आज आपने सबसे महत्वपूर्ण कही कि आपका फेस और आपकी साउंड दोनों राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, इसको सुन के सारे लोग बहुत उत्साहित हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अपने आपके संदेश को गांव-गांव तक ले जाने के लिए अपने प्रयासों को अंतिम दरवाजे तक पहुंचाएंगे. इसके साथ ही हमारे जो साथी लोग हैं वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे और बातचीत में संदेश लेना चाहेंगे. जैसा कि आपने कहा कि ग्रास रूट वर्कर की बात आपने कही है, तो ये सब हमारे साथी ग्रास रूट जर्नलिस्ट हैं और आपने ग्रास रूट लेवल के जर्नलिस्ट को चुना है. ये देश में बहुत महान काम किया है क्योंकि आपको हमेशा तब सरकार ने याद किया है, देश ने याद किया है जब कोई अभियान असफल हुआ है, सफलता के अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचा है. इसको पहुंचाने का श्री गणेश इलाहाबाद से हो रहा है और यहाँ के पत्रकार आपसे जुड़ के इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और आपके इन शुभ काम के लिए जो आपने शुरुआत की है उसके लिए मैं आप सब लोगों को इलाहाबाद में धन्यवाद देता हूँ. अमिताभ जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र पाठक हूँ ANI से और बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप आज हमारे इलाहाबाद के फेस बने हैं इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम के. एक शंका है कि आपने एक सिस्टम डेवलप कर दिया है और अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन